So we are going to start. Okay. कितने आ गए? 19 यानी 18 आ गए. 19 20 नहीं 19. चलो 20 आ गए. ओके, लेट मी स्टार्ट. तो हम स्क्रीन करते हैं शेयर. ओके, तो लास्ट टाइम हम पहुंचे थे एक इम्पोर्टेंट जगह तक. हमारी जो इंट्रोडक्शन है फंक्शनल एनालिसिस के साथ, वो था ये. लेट मी कम. So if x and y are normal linear spaces, x and y are normal linear spaces, then let me write it down as a theorem. इसको as a theorem लिखेंगे. If x and y are normal linear spaces, of course over some field k, वो तो understood है. Then bxy is also a normal linear space under the norm of t is equal to supremum over the closed unit ball, that is norm of x less than equal to 1, norm of t of x. Okay. And एक चीज जो हमें और प्रूव करनी चाहिए further, if y is a Banach space, then so is bxy. Let me write here bxy. So इसको हम प्रूव करेंगे. आधा तो हम कुछ प्रूव कर ही चुके हैं. पहली बात इसको हम फिर से रिपीट करेंगे. So you have got t belongs to bxy का मतलब है t is a map from x to y. T is linear. You already know what's linear. And there exists some k positive such that norm of t of x is less than equal to k times norm. तो ये मतलब है इसका. अगर t यहाँ पे है तो t की ये प्रॉपर्टीज होगी. And of course x and y are linear spaces, उसमें तो कोई शक नहीं, वो तो गिवन है, तभी तो हम linear और norm की बात करेंगे. So then we define this norm of t to be supremum norm x less than equal to 1 norm of tx. तो हमने ये भी देखा ये बराबर होता है also supremum over just the boundary of the unit ball norm of tx. ये दोनों बराबर होते हैं, हमने किया था. और ऑफ कोर्स फिर हमने दिखा दिया ये नॉर्म की सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है. फर्दरमोर अगर ऐसा है k is also equal, मतलब norm of t can also be seen as the infimum of all k such that norm of t of x is less than equal to k times norm of x. ठीक है ना. और then I can also write अगर ऐसा है कि norm of tx is less than equal to norm of t into norm of x for all x belonging to x. Now कोई भी t हो, t belongs to bxy, xy. So this is what will happen. ठीक है ना. ये हमने थोड़ा रिव्यू किया. So पहले तुम यहाँ प्रूव करोगे जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, that star defines a norm. यानी ये norm की सभी प्रॉपर्टीज करता है satisfy. जिससे ये साबित हो गया जो हमने कल किया था एक्चुअली,
is a normed linear space. ठीक है, एक्चुअली हमें ये दिखाना चाहिए अगर y is a Banach space, अगर ये जो कोडोमेन है of our linear transformations अगर ये कंप्लीट है तो bxy भी कंप्लीट है। ये हिस्सा हम आज प्रूव करेंगे। एक्चुअली कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर bxy कंप्लीट है then y is also complete. Now bxy is also a normal linear space, so I can talk of completeness. I can talk of Cauchy sequences, convergent sequences. तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है लेकिन वो हम अभी प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें कुछ और पहले जानना है, तो इसलिए वी विल वेट। लेकिन ये हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर y जो है कोडोमेन ऑफ आवर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, t is from x to y, x is a bounded linear transformation, so y is our codomain and x is our domain. So अगर कोडोमेन कंप्लीट है तो ये जो है ये भी कंप्लीट होगा। So suppose पहले हम करेंगे y is complete, ठीक है ना, हम दिखाएंगे we show that bxy is also complete. कंप्लीट दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा? I have to show that every Cauchy sequence converges inside bxy. So now this is a collection of maps. So I take a collective Cauchy sequence. Now let Tn contained inside bxy. Now Tn means it's a collection of maps from x to y. That has these properties that it's linear and bounded. Be a Cauchy sequence. Cauchy sequence in bxy. तो मुझे दिखाना ये वहीं पे converge करेगा. Okay. Now what I do then, norm of Tn applied to x minus T of m applied to x, right? This can be written as norm of Tn minus Tm, this applied to x, right? Oh, sorry, I get it wrong. Okay. So this applied to x. ठीक है ना? कहने का मतलब this is just a pointwise operation जो है Tn minus Tm of x is Tnx minus Tm of x. Now think of it this. अब जो है Tn, T1, T2, T million, T trillion ये सभी इसमें है ना? So it's a vector space, it's a normal linear space. तो उनका जो difference है वो भी bxy में ही belong करे. मेरे कहने का मतलब है Tn minus Tm also belongs to bxy because it's a vector space. और using this property, ये जो यहाँ नीचे मैंने कोने में लिखी है, उसका मतलब ये हुआ कि norm of Tn minus Tm applied to x should be less than equal to norm of Tn minus Tm multiplied by norm of x. नहीं हाँ. So this should be less than equal to norm of Tn minus Tm multiplied by norm of x. Now which would go to 0 as nm approaches infinity, right? क्योंकि this is a Cauchy sequence. Cauchy sequence का मतलब ये जो यहाँ पे ये चीज है norm of Tn minus Tm, it becomes very 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 small as nm become very very large. So उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब अगर ये 0 होगा तो ये जो यहाँ इससे छोटा बैठा है which is less, ये से less than equal to है और नॉन नेगेटिव है, तो उसका मतलब ये भी 0 जाएगा as nm approaches infinity, which implies that Tn of x is a Cauchy sequence in y. अब चूंकि ये y में रहता है for all x belonging to x, because this is true for all x belonging to x, ना? यहाँ लिख भी सकते हैं, it's true for all x belonging to x. Okay, तो अब हमें मिल गई Cauchy sequence inside y, image of the sequence for each point. तो हमने क्या किया? चलो मैं फिर से लेता हूँ. So I've got Tn is a mapping from x to y.
तो मैंने यहाँ पे अब देखा, मैंने x अप्लाई किया तो Tn of x कहाँ होगा? n runs from 1 to infinity. This would be contained inside y, right? अब x change होता जाएगा, है ना? Because x lies in x, so it is some member of the domain. So you keep applying this, so you will continuously be getting Cauchy sequences of inside y by previous जो हमने किया था previous screen पे. So since y is complete, there exists some y, let us call it t of x, because it depends upon x belonging to y such that Tn of x converges to t of x for all x belonging to x. So then, because y is complete by our supposition, this should happen. So now t of x का मतलब ये है फिर is limit n approaches infinity Tn of x. The question is t linear? अब हमें दिखाना ये जो t है, ये अगर हम दिखा सकें ये linear है और continuous है, तो then t would belong to bxy और हमारा काम मतलब आधा काम हो जाएगा. अगर हमें दिखाना है वो नॉर्म में कन्वर्ज करेगा. ओके, नाउ t जो है, t is linear because t of x plus y किसके बराबर होगा? ये होगा लिमिट approaches infinity Tn of x plus y. लेकिन Tn तो linear है because Tn belongs to bxy. By definition, it is a bounded linear operator. It's a linear that's continuous also. So that would be equal to limit n approaches infinity Tn of x plus Tn of y, which can be written as limit n approaches infinity Tn of x plus Tn of y, नहीं plus limit n approaches infinity. और ये हम इसलिए लिख सकते हैं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, because वेक्टर एडिशन हम जानते हैं is jointly continuous. उसका मतलब ये हुआ this is but equal to t of x. By definition, this is equal to t of y. Similarly, ये लिखने की जरूरत नहीं थी. t of alpha is equal to alpha tx. पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया. दैट इज जब मैं इस तरह से ये मैप डिफाइन करूंगा, t is linear. अब हम आते हैं now to conclude the proof. The proof we need to show, or rather we show, to conclude the proof, we show that t is continuous and Tn converges to t. अगर हमने ये कर दिया फिर with respect to, हाँ ये भी है, the norm in bxy, क्योंकि उसमें कन्वर्शंस होनी चाहिए. चलो इतना तो हो गया. Now since ये हम कर चुके हैं इससे पहले, मॉडुलस ऑफ नॉर्म ऑफ Tn minus norm, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है for norm. This is less than equal to norm of Tn minus Tm. This goes to 0 as n m approaches infinity. It implies that this thing, norms of Tn, जो है, is a Cauchy sequence of real numbers, non-negative real numbers, and hence convergent and therefore bounded. Therefore, which implies that there exists some k positive such that norm of norm of Tn is less than equal to k for all n greater than equal to 1. तो एक बार हमने ये सेटल कर लिया तो कंटिन्यूटी आ जाएगी. So that norm of Tx
is equal to limit n approaches infinity by definition. अब चूंकि norm continuous है तो I can take the limit outside and using the property that जो हमने इससे पहले भी use की, this is limit n approaches infinity norm of Tn into norm of x. This is less than equal to k times norm of x for all x belonging to x, which implies that t belongs to bx1. तो एक और स्टेप हो गया, हमने दिखा दिया ये बुक कंटिन्यूअस है, ये बाउंडेड लीनियर है. So it remains to be shown. अब एक ही चीज बची, that norm of Tn minus t goes to 0 as n approaches. So let epsilon be positive and let n not belong to n such that for m n greater than n naught, this implies that norm of Tn, चलो Tm minus Tn एक ही बात, क्योंकि norm में minus से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, is less than epsilon. So this is the definition of Cauchy-ness. इसमें कुछ नहीं है, this just means that Tn is Cauchy जो हमें दिया हुआ है, ठीक है ना? Now if norm x is less than equal to 1 and m is bigger than n naught, we would have norm of Tm x minus Tn of x is equal to, जो हम इससे पहले भी कर चुके हैं, इसके बराबर. This is less than equal to norm of Tm minus norm of Tn into norm of x, which is less than equal to, चूंकि x को लिया है हमने less than equal to 1, this is less than equal to norm, लेकिन वो है less than epsilon, क्योंकि मैं मान रहा हूँ n is bigger than n naught, ठीक है? Now keeping m fixed and letting n approach infinity, I can do that, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो मैं इसको और ज्यादा बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि ऊपर मेरे लिए कोई कंडीशन नहीं है, नीचे है, it has to be bigger than n naught. So it would imply that norm of Tmx minus Tnx converges to Tmx minus T of x, which implies that norm of Tnx minus T of x is less than epsilon for all m greater than equal to n naught. यहाँ m है, sorry, मैं n को अप्रोच किया, इन्फिनिटी को पता नहीं क्यों. Okay, m and for norm x less than equal to 1. यहाँ लिखा नहीं गया था, तो वो अंडरस्टूड है, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ. तो दिस इज ट्रू फॉर norm of x less than equal to 1, वो तुम खुद समझ जाओ. Okay, so which implies that, so you have norm of Tm minus T of x is less than or equal to epsilon for norm x less than equal to 1, which implies that supremum over norm x less than equal to 1, ये less than, of course यहाँ पे है for all m greater than p. So you have norm of Tm minus T x is less than epsilon for all m greater than n naught, but this is the definition of the norm of Tm minus T is less than epsilon for all m greater than n naught, which implies that this Tm या Tn जो भी तुम लिखना चाहो, मतलब
ओके, तो हमारा काम हो गया एक हिस्से का कि हमने दिखा दिया कि bxy जो है इज ए बानाक स्पेस या कंप्लीट नॉर्मल लीनियर स्पेस जो है इफ y इज अ बानाक स्पेस। ये हम कर चुके, ये हो गया हमारा, राइट? हाँ सर। इतना हम पहुंच गए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमारा एक जो मेन थ्योरम है वो हमें करना है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए ओके, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, I've got bxy, फिर से मैं इसको देखूंगा। You've got x and y are any normal linear spaces, है ना अभी तक। तो bxy can be defined, so it is like all the mappings from y such that t is linear, और ये तो तुम्हें पता ही है, and continuous, yeah, there exists k positive such that norm of t of x is less than or equal to k times norm of x for all x belonging to x. So this is a normal linear space, ठीक है ना? अगर x and y normal linear space है। अब अगर मैं y की जगह लूं k, the field, y की जगह लूं k जो तो field, मतलब x and y are normal linear spaces over some field k. So k is a normal linear space, of course, because it is set of real numbers or set of complex numbers. They are both normal linear spaces. They are vector spaces, the usual operations, and अगर मैं norm को define करता हूँ, norm of x to be modulus of x for all x belonging to k, तो वहां पे norm जो है mod है, modulus function. So it's a normal linear space. So then I can think of bxk, right? bxk क्या होगा? It would be t from x to y, right? वही होगा, लेकिन y की जगह आएगा, जो मैं लिखना भूल गया, y की जगह आएगा k, x to k, such that t is linear and there exists k positive such that norm of t of x is less than or equal to k times norm of x for all x belonging to x. यही होगा ना? मैंने सिंपली x की जगह एक पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस ली, पर्टिकुलर नॉर्मल लीनियर स्पेस ली, राइट, जो इसका फील्ड है। तो यूजुअली चूंकि अब जो tx यहाँ पे होगा, tx बिलोंग करेगा k को, है ना? सो इट वुड बी अ स्केलर, जो रेंज है वो स्केलर्स होंगे, नंबर्स। तो बजाय कैपिटल लेटर के हम इसको डिनोट करते हैं बाय स्मॉल लेटर्स, यानी इसको लिखते हैं बाय f, क्योंकि जो f ऑफ x है, मतलब यूजुअली जो नोटेशंस होती है वेक्टर्स के लिए कैपिटल लेटर्स होते हैं, और मतलब जो जनरल केस लेटर्स होते हैं वो होते हैं फॉर नंबर्स, तो मैं इसे स्मॉल f से डिनोट करूंगा। ऐसा कुछ मजबूरी नहीं है, लेकिन बुक्स पे चूंकि अब यही नोटेशन आम है, so it means that f is linear and there exists a k positive such that, अब यहाँ पे जो tx है वो बिलोंग करता है k में, और वहां पे जो नॉर्म होता है वो मॉडुलस होता है, तो बजाय f के यहाँ t आएगा और नॉर्म की जगह हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आइडिया को अप्लाई किया, तो वी गेट दिस इज bxk। अभी मैंने इसलिए ये किया क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल नाम है x स्टार, इसको हम कहते हैं डुअल ऑफ x। क्या कहते हैं? डुअल ऑफ x। x स्टार इज, डुअल ऑफ x है क्या? ये ऐसी सभी स्केलर वैल्यूड मैपिंग्स हैं that are linear and continuous. Scalar valued means they map into the scalar field जहाँ पे वेक्टर स्पेस है f में x। तो ये वाली कंडीशन है, राइट? ऑफ कोर्स इसका नॉर्म क्या होगा? नॉर्म ऑफ f वहां पे होगा जैसा था सुप्रीमम नॉर्म x लेस देन इक्वल टू 1। अब चूंकि यहाँ नॉर्म की जगह आएगा मॉडुलस ऑफ fx, क्योंकि ये स्केलर है इसीलिए हमने स्मॉल केस लेटर लिया और नॉर्म की जगह मॉडुलस लिया। तो
दैट्स आवर इम्पोर्टेंट, मतलब ये फंक्शन एनालिसिस में इसको स्टडी करना सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब एक्स से ज्यादा एक्स स्टार की ज्यादा इम्पोर्टेंस, एक्स स्टार ही सब कुछ है, ठीक है। तो एक्स स्टार इज ए नॉर्मल लीनियर स्पेस, राइट, क्योंकि ये बी एक्स वाई होता है और इसका जो नॉर्म है वो इसके ऊपर लिखा हो, लेकिन इट्स अ बानाक स्पेस, एक्स इज ए एक्स स्टार इज ऑलवेज ए बानाक स्पेस। क्यों? अभी जो हमने थ्योरम किया उसमें था ये जो y की जगह जो नॉर्मल लीनियर स्पेस है, अगर वो कंप्लीट है तो bxy भी कंप्लीट होगी। k तो हमेशा जो फील्ड है k इज कंप्लीट, हाँ तो सर। चूंकि इसका मतलब इसकी जो कोडोमेन है वो तो कंप्लीट है, देयरफॉर x bxk जो होगा इट वुड बी कंप्लीट। इसका मतलब x स्टार इज ऑलवेज ए बानाक, बनाक स्पेस। x अगर कंप्लीट ना भी हो x स्टार इज ऑलवेज ए बानाक, ठीक है। सो और कुछ इसकी हम कर सकते हैं नहीं, एक्स स्टार पे तो अभी हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन ओके। सो अब मैं एक्स स्टार ही लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा इसको बी एक्स के, बट दैट्स अंडरस्टूड, राइट, मतलब इट इज एक्चुअली दिस थिंग। सो एक्स स्टार इज अ बानाक स्पेस, चलो मैं लिख देता हूँ, और नॉर्म तुम्हें पता है, सब कुछ पता है। अब इसी एक्स स्टार पे हम हमारा पहला मेजर थ्योरम करेंगे, बल्कि जो सबसे बड़ा थ्योरम है फंक्शनल एनालिसिस में, इट्स अबाउट एक्स स्टार, ठीक है। उसका नाम है हान बनाक थ्योरम। हान बनाक दो मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पे इसका नाम पड़ा, हान बनाक थ्योरम। तो पहले मैं इसको स्टेट करता हूँ, ठीक है। तो लेट मी मतलब इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, शायद तुम 10वें सेमेस्टर में इसके दूसरे वर्जन भी पढ़ो। हम जो सिंपलेस्ट वाला वर्जन है हान बनाक थ्योरम का वो करेंगे, मतलब ये बहुत सारी सेटिंग्स में अंडर डिफरेंट कंडीशंस हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम लेंगे सबसे सिंपल वाला अभी क्योंकि शुरुआत है। सो स्टेटमेंट ये होगी, लेट y be a subspace of a normal linear space x and let f belong to y star, ठीक है। देन इन्हें तुम्हें सोचना है, अब मेरे पास x है एक नॉर्मल लीनियर स्पेस, वैसे ये सही तरीका नहीं है लिखने का, लेकिन सेट थियोरेटिकली y उसकी एक सब स्पेस है। अब जो y पे है, y पे हमने एक मैप डिफाइन किया है f टू द फील्ड k, f है इस पे मैप, इट इज लीनियर, यानी f बिलोंग्स टू y स्टार का मतलब क्या है, f इज linear and continuous. Then f can be extended to a functional f naught, to a bounded linear functional जिसका नाम हम रखेंगे f sub naught belonging to x star, such that norm of f naught is the same as norm of f. तो ये है अपना स्टेटमेंट ऑफ द हान बनाक द नॉट। तो मैं एक्सटेंशन का मतलब क्या है, यानी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आई कैन देन डिफाइन एफ नॉट फ्रॉम एक्स टू के विच हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज, मतलब अगर एफ सब स्पेस पे डिफाइन कर सकता हूं मैं, तो पूरी स्पेस पे भी मैं डिफाइन कर सकता हूं एक मैप विच इज linear and continuous and scalar valued such that norm of f naught is equal to f. Furthermore, ये जो मैंने f extension का मतलब ये है
कि f नॉट अगर मैं y पे अप्लाई करता हूं तो वो होगा सेम एज f। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, f नॉट restricted to y is the same as f। यानी ये इसका एक्सटेंशन है। अगर मैं वापस जाऊंगा ना इस सब स्पेस पे f नॉट को, तो ये f ही होगा, यानी f को ही हमने बढ़ा दिया, उसी की डोमेन को हमने बढ़ा दिया, क्योंकि उसकी डेफिनेशन जो f y पे थी, सब स्पेस पे थी, विदाउट चेंजिंग दैट हमने एक दूसरा फंक्शनल डिफाइन किया जो सारी x पे डिफाइंड है। कहने का मतलब f नॉट ऑफ x वुड बी f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू y। दिस इज व्हाट वी मीन बाय एक्सटेंशन, कि जब मैं इसको वापस रिस्ट्रिक्ट करूंगा तो वी रिकवर जो हमारा ओरिजिनल फंक्शनल गिवन था। सो दैट इज आवर हान-बानाख थ्योरम स्टेटमेंट, उतना इधर उधर नहीं लगता। ओके, फॉर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम जो मेन चीज है वो इसका लेमा है, प्रूफ तो उसमें आ ही जाएगा। सो लेट मी स्टेट द लेमा टू प्रूव दिस थ्योरम। ये थोड़ा लंबा है। We need the following lemma. वो क्या है? Let me write down the lemma. इसमें हमें टाइम लगेगा करने में। लेमा ये है, फिर से वही, let y be a subspace of a normed linear space x, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया NLS, and let f belong to y star जो कि था, if x naught vector that belongs to x but not y, ऐसे लिखते हैं, ये x में है लेकिन y में नहीं है, यानी y से बाहर है, and if we denote, अगर हम लिखें इस तरह से, y naught को as y plus x naught, मतलब है उसका the subspace generated by, यार ऐसे में लिखता हूँ बेटर, ये है the linear subspace या vector subspace spanned by, कहाँ पे मेरा इरेजर, the linear subspace spanned by y and x naught, then f can be extended to f naught belonging to y naught star such that norm of f naught is the same as norm of f। अब ये स्टेटमेंट इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, वही है y सब स्पेस, वही सब कुछ है, लेकिन हम ये कह रहे हैं, या हम कह रहे थे f को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू द होल ऑफ x। यहां हम कह रहे हैं कि अगर हम y के साथ एक और वेक्टर का स्पैन जोड़ दें, यानी पहले x नॉट अगर y से बाहर है, एक सब स्पेस है, अब मान लो यहाँ पे एक सब स्पेस थी तुम्हारी, y इज अ सब स्पेस ऑफ x। अब अगर y एक और वेक्टर है जो x में तो है लेकिन x नॉट डज नॉट बिलोंग टू y, तो मैं y कर रहा हूं एज ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ y यूनियन x नॉट। इसके सभी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर मैं लूं, उसका नाम मैंने y नॉट रखा, linear combinations, and it would be a subspace for y that would be just slightly bigger than y। यानी अगर मैं y को लूं, y नॉट को लूं थोड़ा सा बड़ी, यानी एक वेक्टर से बड़ी, एक थोड़ा मैंने इसका बढ़ा दिया, it contains one more vector plus all the linear combinations, of course just not, फिर तो ये subspace है ना, span हम कह रहे हैं, span का मतलब सारी linear combinations of y and x नॉट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें तो f कैन बी एक्सटेंडेड टू दिस बिगर सबस्पेस, ये जो थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, हम इस मैप को एक्सटेंड कर सकते हैं टू ए स्लाइटली बिगर सबस्पेस ऑफ x विद ऑल द प्रॉपर्टीज दैट इट इज लिनियर एंड कंटिन्यूअस, एंड उसके नॉर्म का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा।
ठीक है, तो लेमा हमें बता रहा है हम एक वेक्टर, फिर हम एक एक वेक्टर करके जोड़ के ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना, हम एक्चुअली पूरी स्पेस तक पहुंच सकते हैं। हाँ सर, पूरा एक्स आएगा। मतलब दैट्स द आइडिया, लेकिन उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है कि अगर हमारे पास अनकाउंटेबली मिनी है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, वो हम बाद में रिजॉल्व करेंगे। पहले पहला स्टेप तो कर लें कि अगर हम थोड़ा सा y को बढ़ाएं तो तब तक हम इस फंक्शन को बढ़ा सकते हैं विद प्रिजर्विंग इट्स प्रॉपर्टीज, दैट इज लीनियरिटी एंड कंटिन्यूटी। यानी इसकी डोमेन बढ़ा सकते हैं हम स्लाइडली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। डोमेन बढ़ाने का मतलब y से अब इसकी डोमेन हो गई y0, जिसके अंदर y भी है लेकिन थोड़े से और वेक्टर्स भी है, बिकॉज इसमें अब x0 भी जुड़ गया। तो थोड़ा सा इसकी डोमेन बढ़ा सकते हैं हम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स प्रॉपर्टीज और द वैल्यू ऑफ इट्स नॉर्म। ये जो नई फंक्शन है उसका नॉर्म और जो पहले वाली फंक्शन थी which was on a smaller set, उसका नॉर्म सेम हो। सो दैट्स आवर लेमा। लेकिन ये लेमा है बहुत बड़ा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, प्रूफ। We first prove the lemma under the assumption। और हम एक काम कर सकते हैं, तुम्हें पता है ये जो मेरा पुराने लेक्चर्स है ना फंक्शन एनालिसिस के यूट्यूब पे, मेरी चैनल पे, हेलो, हाँ तुमने सर। देखे है वो फंक्शन एनालिसिस पे? हाँ सर। उसमें हान बनाक थ्योरम मैंने हाँ प्रूव सर, वो किया है। है। वैसे तुम चाहे तो उसको देख लेना फिर से, ठीक है, यहाँ पर भी हम करेंगे। So we first prove the lemma under the assumption that X is a real normal linear space. Real normal linear space. By that I mean real का मतलब क्या है? X is a vector space over R. उसका मतलब मेरा जो मैप है F from Y to R, मतलब Y to K नहीं होगा, वो Y to R होगा, जो ना लीनियर फंक्शनल है, जो F belongs to Y star। तो मैं पहले लेता हूँ R, फिर इससे मैं फिर प्रूव करूंगा फॉर कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस। तो रियल नॉर्मल लीनियर स्पेस के हम लिए हम प्रूव करेंगे। वी में एज्यूम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, WLOG, यानी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम मान ले दैट नॉर्म ऑफ F इज इक्वल टू 1। उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखो, पहले तो ये है कि F जो है ये जीरो ऑपरेटर नहीं हो सकता, बिकॉज F, मैं क्या कह रहा हूं, ओके, should I write it like this?